आप सबके मेरे पास आंसर हो गए हैं एंड लेट्स सी कि इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं. ठीक है. So if you talk about MCQ number 1 बच्चों, so in this MCQ we have two experiment 1 and 2. An excess of powder calcium carbonate was reacted in a flask with dilute hydrochloric acid. Okay. and you can see this reaction number 1. Reaction number 1 आपसे क्या कह रहा है? Reaction 1 आपसे कह रहा है the carbon dioxide was collected and the volume of the gas at regular interval. ठीक है ना. आपने वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट की है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, और जबकि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आपसे क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर बच्चों आप लोगों ने क्या किया है? द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट वाज मेजर एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि ये डिक्रीज इन मास वाला है. ठीक है ना. मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट वाज मेजर, राइट. सो यू कैन सी दिस. अब हमारे पास दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस वाला है और नीचे कौन सा आपके पास मास डिक्रीमेंट वाला. सो दे आर आस्किंग व्हिच ग्राफ करेक्टली शोज द रिजल्ट ऑफ दीज टू एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है ना. वी नो दैट जब मास डिक्रीज होता है जब मास डिक्रीज होता है तो हमारे पास कौन सा वाला यूज होता है? यू कैन सी दिस, ये वाला यूज होगा हमारे पास, क्योंकि एक हद तक कम होगा उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है ना. यहाँ पर देखें कंटिन्यूअसली कम ही हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है ना. आपके पास Y हो सकता है और गैस का जो कलेक्शन है वो W हो सकता है. सो इसका मतलब है व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस MCQ? यू कैन से दैट एक्सपेरिमेंट जो 1 है उसके अंदर आपके पास W हो सकता है, यानी कि ये राइट आंसर हो सकता है, या तो ये हो सकता है, और जो एक्सपेरिमेंट 2 है उसके अंदर Y हो सकता है. इसका मतलब ये है कि आपके पास फर्स्ट MCQ का जो आंसर होने वाला है वो A होने वाला है, right? And in the second MCQ you can see over here, but they are asking for the following statement refer to the use of the catalyst in chemical reactions. A catalyst increases the activation energy. That's completely wrong. Activation energy को low करता है catalyst. Then a catalyst increase the rate of reaction. That is fine, right? A catalyst increase the yield of the reaction. No, not at all. सिर्फ और सिर्फ speed up करता है reaction को, productivity नहीं बढ़ाता, product पे effect नहीं करता. So the only one statement is right over here, which is the 2 only. So the right answer will be C. Is it right, बच्चों? Yes, sir. And then in the last one, they are saying two gases X and Y reacts together to form a gas Z. With change in condition will both increase the rate of reaction and increase the equilibrium yield of Z. And the equilibrium yield is actually related with a reversible reaction. So you need to correct the answer over here, which change in both. If you are decreasing the concentration, so definitely the rate of reaction is going to be decreased. So ये तो रही हो सकता है right answer. Then if you increase the pressure, so increase in pressure will increase the rate of reaction, and also increase in pressure will move the reaction towards less number of moles और जो कि product side पे हैं. So the right answer will be B. इसका answer B right होना चाहिए. Is that clear, every one of you? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वो हम अगर हम इन 3 MCQs की बात करें, so you can see over here in MCQ number 4 the diagram, you can see this, the diagram shown over here is about the mass 1. This diagram is only for the decreasing in mass, right? The apparatus is set to measure the rate of reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid. The mass of the flask content measured at regular interval, right? Which graph correctly shows how the mass of the flask and content changing with the time. So it's quite easier. We know that the right answer will be C, right? We know that we do this in the classes, right? एक यही वाला हमारे पास मास कलेक्शन वाला है, जब मास डिक्रीज होता है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, और एक हमारे पास गैस वाला था उसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. So it's quite easier for us, right? So let's move towards MCQ number 5. Limestone reacts with hydrochloric acid, changing with which reaction condition does not affect the rate of reaction. Now you can see this बच्चों that the limestone is solid, hydrochloric acid is aqueous. So definitely if you are increasing or decreasing pressure, there is no effect of doing this because pressure is only applicable for gases. So if you change pressure, there is no effect on the overall rate, right, bachcho? Yes. Yes, sir. Yes. Then if you talk about the MCQ number 6, so in a graph
curve 1 was obtained by observing the decomposition of 100 centimeter cube of 100 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube hydrogen peroxide solution catalyzed by manganese oxide. Right, this is graph 1. You can see this. This is graph 1. Right, and if you talk about graph 1 and graph 2, you can see the difference over here. There is a difference in product. There is a difference in product. There's a difference in the volume of oxygen produced. Right, so there must be something. You can say that you are going to increase the concentration and something about hydrogen peroxide, क्योंकि जब वो increase होगा तभी product increase हो सकती है. So you can see over here the answer A is adding some 0.1 mole per decimeter cube hydrogen peroxide solution. आप थोड़ा सा hydrogen peroxide बढ़ाओगे तभी आपके पास ऑक्सीजन की प्रोडक्ट बढ़ेगी. इसके अलावा अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा. लेस मैग्नीज ऑक्साइड यूज करते हो, कैटलिस्ट को बढ़ाकर या कम करके यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा. यूजिंग अ डिफरेंट कैटलिस्ट दूसरा भी यूज करोगे तो स्पीड पर फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा. तो द राइट आंसर विल बी ए, द ओनली पॉसिबल आंसर. You know that if you are changing the concentrations of the reactants, so they can change the amount of product as well, and they can even change the speed of the reaction as well. Right, आप देखेंगे रिएक्शन आपके पास थोड़ा सा इसके अंदर आपके पास एडिशन हुई है प्रोडक्ट की. अब वो रिएक्शन स्लो हुआ है, फास्ट हुआ है, व्हाटएवर, उसका कोई सीन यहाँ लिखा हुआ नजर नहीं आया. बस ये बात कही गई है कि आपके पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बढ़ गई है. लोअरिंग टेम्परेचर से भी आपके पास ये ग्राफ आ सकता था अगर ये ग्राफ 1 और ग्राफ 2 दोनों ही एंड में एक बराबर होते तो लोअरिंग टेम्परेचर विल बी द आंसर, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को आपका स्लो कर रहा होता. लेकिन अभी लोअरिंग टेम्परेचर इसलिए राइट आंसर नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट भी थोड़ी ज्यादा आई है. इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चलें, now the turn is for 7, 8 and 9 MCQs. चलें, अब आप लोग पहले इसको सॉल्व करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा how can we solve these MCQs. चलें, so here we have 3 more MCQs, 7, 8 and 9. So let's see what they are saying. A student wants to carry out an experiment to follow the rate of reaction between hydrochloric acid and marble chips. Which diagram shows the apparatus that is suitable for this experiment? Right. So बच्चों, you need to keep remember that कि आपके पास अगर for suppose आप मास वाला कर रहे हो तो this is the best one. मास के लिए आप कर सकते हैं, ऊपर से कंटेनर आप ओपन छोड़ सकते हैं, there is no issue. राइट, और अगर आप गैस रेंज वाला कर रहे हैं तो देयर शुड बी ए क्लोज कंटेनर. आप देखें यहाँ पर भी टैप फनल लगा हुआ है. टैप फनल जो होता है इसके अंदर जो है आपके पास बंद करने की जगह होती है, तो यू कैन क्लोज दिस. तो दिस कैन आल्सो बी यूज्ड, राइट, बट दिस कैन नॉट बी यूज्ड. देखें ये वाला जो है आपके पास, ये वाला आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि नीचे मास की मशीन भी नहीं है मास मेजर करने के लिए, और ऊपर से ये भी ओपन एरिया है. सो ये किसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लायक बिल्कुल नहीं है. You can even use this because इसमें मेजरिंग सिलेंडर है तो गैस यहाँ से कैलकुलेट हो सकती है और यहाँ से क्लोज भी है. So this can also be used for the calculation of rate of reaction. So 1, 2 and 4, these 3 apparatus are right for the measuring of rate of reaction. So you can say that D will be the right answer for this MCQ. Right, बच्चों? Yes, sir. Then in MCQ number 8, बच्चों, what they are saying, which change will not increase the rate of reaction? कौन सा वाला rate of reaction increase नहीं कर सकता? They are saying that increase in concentration of aqueous reactants कर सकते हैं बिल्कुल, and increase in pressure of gaseous reactants ये भी कर सकते हैं, and increase in temperature of a reaction system and increase in the particle size. Yes, increase in the particle size. I told you in the last class बेटा ये याद रखना है, particle size छोटा करने से surface area बढ़ता है, right? So this is the wrong one. It will decrease the rate of reaction. Right, बच्चों? Yes, sir. Then the following changes could be made to the conditions in the reaction between zinc and hydrochloric acid. Increase the concentration of acid, increase the particle size of zinc, increase the pressure of the system, increase the temperature of the system, right? So you can see this, that only 1 and 4 can be applicable for zinc and hydrochloric acid, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस है और जिंक सॉलिड है. तो अगर आप इसका साइज बड़ा कर देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है ना. और अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो इट इज ओनली फॉर गैसेस. सो व्हिच पेयर ऑफ चेंजेस विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? ओनली 1 and 4. सो द राइट आंसर विल बी बच्चों बी.
Is that right or not? Yes, sir. Yes. So let's move towards some other MCQs. So here we have 10, 11 and 12. So it's your turn first. पहले आप इनको solve करें, फिर मैं इनके सही आंसर और सही explanation आपको दूंगा. चलें start. So ये MCQs हम देख लेते हैं. And I told you that many of you having 3 out of 3 MCQs correct, and many of you having 2 out of 3. किसी का भी ऐसा नहीं है कि एक सही हो out of 3. So it's good. But I think ये 3 MCQs बहुत आसान थे. तो आप लोगों ने 3 में से 3 सही करने थे. अगर किसी का एक गलत भी हुआ है तो कोई मसला नहीं है, आप इससे बेहतर कर सकते हैं next time. That's okay, no issue. So let's talk about MCQ number 10. Student measure the rate of reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid on graph showing the volume of gas produced against time is shown. And this is pretty much easy. We know that because this is what we are going to talk about in the first class, right? हमने सबसे पहले इसी की बात की, उसके बाद तो हमारे लिए ये बिल्कुल हलवा ही हो गए सारे MCQs ना. So you can see this that अगर आपको volume measure करना है तो for that you must have gas syringe, and if you want to measure time so you must have a stopwatch. So what are the possible things जो कि आपके पास होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए बच्चों? वो आपके पास होनी चाहिए gas syringe and stopwatch. The right answer will be C. C will be the right answer. There is no use of pepper. There is no use of pepper. There is no use of balance when you are measuring the gas, right? So in the second one, that is 11th MCQ, copper carbonate powder was heated. The loss in mass was plotted against time as shown in on the graph. During which time interval is the reaction is fastest? We know that when we start the reaction, we have a greater number of particles in the start of reactants, so they will combine together fastly, and then the rate of reaction will be fastest in the start. So 0 to 2 minutes will be the fastest rate of reaction, right? And then in the 12th one, which statement about catalyst is correct? So catalysts are used in industry to reduce energy costs. That's good. That's the right answer. It decreases the activation energy, which is actually decreasing the amount of energy that we are providing to the system. So in this way, it saves our cost. Then catalysts used up during the reaction? No, they remain, you can say that, unused in the end. Iron is used in the catalyst contact process. The vanadium pentoxide used होता है, and transition metal can be used as a catalyst. So this is also wrong. So the right answer will be A. Is it right, every one of you? Yes. Okay, so let's move towards the next 2 MCQs, 13 and 14. जल्दी से इसको कर लेते हैं. Which graph represent how the rate of reaction varies with time when an excess calcium carbonate reacts with hydrochloric acid? So बच्चों, इसका right answer क्या होने वाला है? Which graph represent how the rate of reaction varies with time? Rate of reaction क्या होता है बच्चों? When the time goes, the rate of reaction is going to what? Decrease. Rate of reaction ऐसा क्या हो जाता है बच्चों? Decrease होता है. तो what is the right answer? Right? कौन सा आंसर होगा? B. B, right. Rate is going to be decreased with respect to time. Okay. And then what about MCQ number 14? This is something very special MCQ, you can say that. It's a good question. In experiment number 1, an excess of finely powder, the thing you need to keep remember is finely powdered marble chips is added in 20 centimeter cube of dilute hydrochloric acid. And in experiment number 2, carries out under the same conditions and pressure per temperature, excess marble chips, you can see this over here, marble chips, and over here finely divided marble powder, and the same amount of everything over here. Then this is what experiment number 2 is saying. क्या हो रहा है आपके पास? Experiment number 2 के अंदर carried out under the same conditions of temperature and pressure, and excess of marble chips is added to 20 centimeter cube of dilute hydrochloric acid of the same concentration. The total volume of carbon dioxide given off are determined at intervals and plotted against time, right? B है So, answer is correct. which pair of curves is obtained in this in the 2 experiments, right? So you need to keep remember when the amount of acid is same for both of them, with the concentration and the volume is same, and the
and the calcium carbonate is X for both of them. So definitely the product which is going to form is same for both of the reaction. So दिए दो ग्राफ हो सकते हैं, Z वाले की तो बात ठीक है ना. उसके बाद if you are using finely powder, so the rate of reaction will be faster. So ये होना चाहिए आपके पास कौन सा वाला, ये फास्टर वाला जो है आपके पास 1 है और ये जो y है it is 2, right? So you can say that ये आपके पास हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये हो गया आपके पास सेकंड एक्सपेरिमेंट. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज x, so या तो आपके पास आंसर ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, और सेकंड वाला है y, so the right answer will be B. Is that right, every one of you? Yes. Chale, now this is your turn, 15, 16 and 17. Just do it quick and send me the answer. Then we will discuss these MCQs as well. So if you talk about these MCQs that are on the screen right now, so you can see this carbon dioxide was produced when a given mass of zinc carbonate reacted with excess hydrochloric acid, which results show what would happen if the reaction was repeated at a higher temperature. If you are increasing the temperature, so definitely the reaction will be faster. So maybe the right answer will be A or D, right? But the volume of carbon dioxide will remain same. There is no effect of increasing temperature on the product. So the right answer will be A. Is that right, every one of you? Yes, sir. So many of you selected the right answer as A, and out of you all, only one is wrong, right? तो बाकियों ने सही किया, जिसने गलत किया वो चेक कर सकता है कि उसने क्यों गलत किया ये और क्या आंसर लगाया उसने. डी आंसर लगाया. तो बेटा देखो ग्रेटर नहीं होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है. देन the rate of reaction between a given mass of calcium carbonate and an excess hydrochloric acid is studied by collecting the carbon dioxide in a graduated syringe. The result are shown in the graph. How much time is required for the half calcium carbonate to react? Okay, that's something good. So let's see case का आंसर हम किस तरह identify करेंगे. Let's see over here बच्चों, what is the total volume we have right now. The total volume is 90, right? So the half of 90 is 45. So where is 45? This is 42, 44, and this will be 45, the half of this, right? So you can say that, yeah. This will be somewhere like this. And this will be somewhere like this. So this is less than 1. So you can say that the right answer of this will be A. Right, bacho? Is that right, every one of you? Yes, sir. So this is how you can find out the half of the reaction. देखें, आपने total volume को देखकर उसको half करना है और उसके बाद आपने time measure करना है, ठीक है ना. और इस किसी और तरह से आप मत चेक कीजिएगा. फॉर सपोज आप ऐसे मत चेक कीजिएगा कि यहाँ पर रिएक्शन एंड हो रहा है 3 मिनट्स पर, तो इसका हाफ जो रिएक्शन हुआ होगा वो 1.5 पर. तो इस तरह मत चेक कीजिएगा. रिएक्शन आपके पास आधा कब हुआ, जब आपके पास प्रोडक्ट आधी बनी, ठीक है ना. तो उस तरह आप चेक कीजिएगा. टाइम कितना लगा उससे हाफ मत कीजिएगा, ठीक है. देन which change will increase the speed of the reaction between 1 mole of each of these gases and y? Which change will increase the speed of the reaction between 1 mole of each of the gases x and y? A decrease in surface area का कोई बात नहीं कर सकते आप gases में. A decrease in temperature, no. A decrease in volume of the reaction flask. Yes, that is a right answer. You can say that जहां पर reaction हो रहा है, अगर उस फ्लास्क का वॉल्यूम आप कम कर देंगे तो दो गैसेस आपने ऐड की हैं वो उस कम वॉल्यूम में जो है थोड़ी सी कंप्रेस हो सकती हैं. So the pressure will be higher over there. The molecules of the gases come closer to each other, and then the rate of reaction will be higher. So the right answer will be C for this MCQ. Is that right, every one of you? Yes, sir. Yes. सर मुझे 16 समझ नहीं आया. 16 क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है कि how much time is required for the half of the calcium carbonate to react.
जब हाफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको निकालना है तो इसके लिए आपके पास जब वो कंप्लीटली कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हुआ तो 90 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। जब हाफ रिएक्ट किया होगा तो 45 बनी होगी, राइट? ओके, यस, तो 45 में कितना टाइम लगा? 0.95 मिनट्स, राइट? यस। Okay, so next, this is MCQ number 18 and 19. So this is your new task. Let's start this. Okay, so if you just look at over there on this MCQ number 18, so they are asking for कि ये experiment 1 है और ये experiment 2 है, तो इनकी variation in speed with respect to time आपने discuss करनी है। So you can see this कि ये ज़्यादा steeper है, experiment number 1 ज़्यादा steeper है, तो ये ज़्यादा quicker है। So speed किसकी ज़्यादा है? experiment 1 की speed ज़्यादा है, तो या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, इन दोनों में से कोई right answer हो सकता है। ये स्पीड एक्सपेरिमेंट 2 की ज्यादा दिखा रहा है, ये स्पीड एक्सपेरिमेंट 2 की ज्यादा दिखा रहा है, तो दिस इज रॉन्ग, राइट? एंड एक्सपेरिमेंट 1 क्योंकि फास्टर है, सो इट विल टेक लेसर टाइम, सो दिस इज लेसर टाइम एंड दिस इज ग्रेटर टाइम, सो इट मींस दिस इज रॉन्ग एंड द राइट आंसर विल बी ए। इज इट राइट बच्चों और नॉट? Yes, sir. यस सर। एंड यू कैन इवन सी दिस, अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को देखते हो तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को देखें, उसके अंदर आपके पास इट इज टेकिंग मोर टाइम, right? This reaction taking more time, so speed is slower and it is getting more time, so the right answer will be A, right? And in the next MCQ, which reaction is the fastest? कौन सा reaction fastest होगा? So dilute hydrochloric acid and the temperature is 30 degrees centigrade and lumps of calcium carbonate, so definitely lumps are not going to be faster, powder is going to be faster, right? The first thing that you need to keep remember, the right answer या तो C हो सकता है या तो D हो सकता है। Here we know that when the temperature is higher, so definitely the reaction is faster, but over here the temperature is same for both of them. Then we know that dilute hydrochloric acid and concentrated hydrochloric acid, so the one which is concentrated have more ions over there of H ions, so they will react more faster with calcium carbonate, so the right answer will be D. Is that right, every one of you? Yes, sir. Okay, so the last MCQ for today's class, चलें दोनों ही कर लेते हैं। Dilute hydrochloric acid was reacted with magnesium ribbon at the volume of, and the volume of hydrogen gas evolved was measured for the first 80 seconds, right? What was the average rate of production of hydrogen gas? तो that's quite simple बच्चों, average निकालना है हमने। average कैसे निकलता है? The total divided by total, right? So you can see this, the total is actually what? It is 32, right? So the total volume right now we have 32 centimeter cube and it's all about in 80 seconds. So what is the right answer? Just divide this bacho. What is the right answer? It's 4, 8, 4, 8, 10. It's 0.4. The right answer will be A, 0.4. right bacho? And in the last one, this is 21, calcium carbonate was reacted with an excess of hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid. The experiment was carried out, 100 gram of calcium carbonate. 100 gram of calcium carbonate, large lumps and 50 grams of calcium carbonate, fine powder. So definitely it is faster, but the amount of gas formed, carbon dioxide, will be lesser. It is slower, but the amount of gas produced is greater because of the greater mass, right? So experiment 1 जो है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। देखें experiment number 1 ऊंचा है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है ना? experiment 1 यहाँ पर भी ऊंचा है, but this is not the right answer क्योंकि इसमें volume of carbon dioxide same दिखाया जा रहा है। Then 50 जो आपके पास experiment number 2 है वो faster होना चाहिए, तो experiment number 2 faster कहाँ दिखाया जा रहा है? You can see this in the D. The experiment number 2 is much more steeper towards volume of gas. So you can say that D will be the right answer. What do you say, bachcho? Is that right or not? Yes, it's right, sir. चलिए तो फिर आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में you all have a test for this